Welcome learners. Today we are here to learn about psychology at senior secondary level. So we have chapter 2 today, which is how psychologist studies. So today we will be discussing the different methods that are there in psychology which are used for research purposes and which are used for observation and collecting data. So let's dive into it and let's begin with the session. So first we will discuss the objectives of the session. First objective is to understand the goals of psychological studies and research, understanding basic and applied aspects of research, familiarizing with different methods used by psychologists, understanding the steps involved in conducting experiments, understanding different tools used by psychologists, understanding the use of statistical analysis in psychological studies. So this was an overview of what we are going to study today and how we are going to go about this session today. So let's start with the introduction. First, it says that today there is considerable interest among common people, policymakers, students, professionals and businessmen and women in learning about psychology as a discipline. So here you can see that the first point says that how people are so much interested in studying psychology. But if we want to know why is this the case, why we are so much interested in studying psychology and why psychology is becoming a broad research area. Earlier in chapter 1, we discussed that psychology is the study of mind and behavior, which is a major part of our human civilization. And we all want to understand the human behavior in the sense that it helps us in behaving and controlling the situations in a better manner. So that's why all these interest groups are actually showing interest in psychology. Psychology is the scientific study of brain, mind and behavior, and psychologists conduct their studies using scientific methods. So here, as you can see, that psychology is the scientific study of brain. Just a moment. Psychology is the scientific study of brain, mind and behavior. So we had a very in-depth discussion in the last class over brain, mind and behavior. So which was the definition of psychology? It is a major part of the definition. Next, it says that psychologists conduct their studies using scientific methods. We discussed in the previous class what are scientific methods and why are they scientific in nature. We call them scientific methods because they are objective in nature. There is no biasness involved in these methods, and when you do a research using the scientific method, once the outcome is there, if somebody else is doing the same research study using the same methods, they will get the same outcome. And that is why this is scientific in nature, because replication of the outcome is possible. So that is what we mean by scientific methods. Let's move on to the next slide. As a science, psychologists try to understand the nature and functioning of behavior and experience. So here we can see that the major goal is to understand the nature and functioning of behavior and experience. So here our major concern is to understand the human behavior and the human experience. And experience itself involves perception, sensation, interpretation and all the different factors that are involved in that particular behavior or experience. So that is one way to understand why are we interested in psychology. Okay, so let's come to the next point. So it says that it is important for scientific studies to be objective and follow a standard procedure which leads to the same outcome by each and everyone who follows the given method. So let's understand it in a little depth. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि
साइकोलॉजी के लिए एज अ साइंटिफिक स्टडी इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें कोई बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस किसी भी रिसर्च स्टडी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। जो इवेंट जैसा है उसे वैसा ही ऑब्जर्व किया जाए और वैसा ही उसे रिकॉर्ड भी किया जाए और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाए। वाइल कंडक्टिंग दीज रिसर्च स्टडीज एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाए which leads to the same outcome by each and everyone who follows the given method. We just went through this point only कि replication तभी possible है जब आप एक standard procedure follow करेंगे और बिना किसी biasness के उस research study को conduct करेंगे। Only then कोई दूसरा इंसान उसे replicate करके same outcome ले सकता है। अगर आपने किसी भी मूवमेंट पे उसमें अपने पर्सनल बायसेस इन्वॉल्व कर दिए, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसमें डाल दिए, तो वहीं पे आपकी स्टडी थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाएगी और उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। उससे क्या होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई सेम मतलब कोई उस स्टडी को दोबारा कर रहा है तो हो सकता है उसका आउटकम आपके आउटकम से डिफरेंट आए, जिससे क्या होगा कि जो आपने प्रूव किया था वो फेल हो जाएगा क्योंकि रेप्लिकेट नहीं हुआ, इसको कोई रिपीट नहीं कर पाया, तो इसीलिए आपका रिसर्च फेल हो गया और रिजेक्ट हो जाएगा। सो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना किसी भी रिसर्च स्टडी में इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now we will discuss the goals of psychology, the major goals of psychology. So we discussed the 4 goals of psychology earlier also in a little brief. So let's see what are these. Let's just revise them once more. So the first goal is description. It involves observing any behavior and noting everything about it. It determines the range and boundary of the phenomena. So basically description means आप जब कोई रिसर्च स्टडी कर रहे हैं या आप किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप उसको डिस्क्राइब करें जैसी वो है, उसमें अपने पर्सनल बायसेस या अपनी इंटरप्रिटेशन को इन्वॉल्व ना करें और जैसी वो घटना घट रही है उसको उसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। सो दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। It means a statement of the factors which determine the phenomena under study. So explanation is हमने किसी situation को describe किया कि इस situation में ये चीजें हुई। Explanation में we will talk about कि ये चीजें क्यों हुई। So that part is called as explanation. Next we have is control and prediction. So prediction is determining what will happen in the future is a prediction, whereas control is the ability to predict, provides the knowledge necessary to bring change that is desirable. So let's discuss this a little. So basically prediction is when you are able to predict what will happen in the future. आपने कोई particular situation observe की, उसके basis पे आपने एक description दिया, एक एक्सप्लेनेशन दी कि इस सिचुएशन में ये इसलिए हुआ। अब इस डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे कहीं पे कुछ सिमिलर सिचुएशन हुई, आप वहां पे प्रिडिक्शन कर पाए बेस्ड ऑन द अर्लियर डेटा दैट यू रिकॉर्डेड। अब कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल इज बेसिकली उस सिचुएशन में अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए और आपको पता है क्योंकि आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो आप उस फैक्टर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, सो दीज आर द 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। लेट्स अंडरस्टैंड देम विद एन एग्जांपल। ओके, सो एज अ रिसर्चर आई वांट टू स्टडी my learning, say not my learning habits, that would be very specific. Let's say I want to study the learning habits of a particular class, और क्लास भी स्पेसिफिक ले लेते हैं। चलिए बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लर्नर्स की लर्निंग स्टडी हैबिट्स। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने
वहां पे डिस्क्रिप्शन किया कि क्या क्या कोर्स है, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके का पेपर होता है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या है। मैंने सारी सिचुएशन का जो भी डेटा है वो सारा डिस्क्राइब किया। ओके, उसमें मैंने जो लर्निंग मेथड्स इन्वॉल्व है जो बच्चे यूज करते हैं, जैसे रोट मेमोराइजेशन यूज करते हैं, या जैसे किसी किसी को आदत होती है लिख के याद करने की, तो इस तरीके से जो भी डिफरेंट लर्निंग मेथड्स थे जो बच्चे पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट लर्नर्स यूज कर रहे हैं, वो मैंने डिस्क्राइब किए। उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो लर्निंग मेथड्स हैं ये यूज कर रहे हैं ताकि ये लोग एक एग्जाम में परफॉर्म कर सके और उस एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सके। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। नाउ वी कम टू प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में मैं क्या करूंगी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट लर्नर है इस फलाना कॉलेज के और इस फलाना क्लास के, ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो अब जब इनका नेक्स्ट एग्जाम आएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम होगा, तो ये फिर से यही चीज करेंगे। तो ये तो हो गया प्रिडिक्शन। अब मैं कंट्रोल उस सिचुएशन में करूंगी जहां मुझे लगता है कि ये किसी तरीके से किसी को डैमेज पहुंचा रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। जैसे रोट मेमोराइजेशन का ये प्रॉब्लम है कि आप उसे याद तो कर लेंगे, आप रट्टा तो लगा लेंगे, लेकिन एग्जाम के तुरंत बाद आप वो चीजें भूल जाएंगे और उसको फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप कुछ इतना पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक करियर की तरफ जाना चाहते हैं। करियर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन एट सम पॉइंट माइट बी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको भूल नहीं सकते। सो आई थिंक कि इनके लर्निंग मेथड्स में थोड़े चेंजेस आने चाहिए। तो मैं यहां पे कंट्रोल करूंगी और उनको मैं नए लर्निंग मेथड्स इंट्रोड्यूस करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं शायद उनको बोलूं कि आप फ्लैश कार्ड से चीजें याद करनी शुरू कीजिए, दैट माइट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आप बहुत लंबे टाइम तक इंफॉर्मेशन अपने साथ रख पाएंगे और सिर्फ एग्जाम तक आप सीमित नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने इस सिचुएशन में कंट्रोल भी लाया। सो दीज वर द 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So now we will discuss basic and applied research. So basic research deals with developing, understanding, theory building and testing of a theory, and applied research deals with solving real life problems. Okay, so basically what happens is yahan pe, so this is basic research and here we are talking about applied research. Okay, so in basic research we develop theories. ठीक है, we actually collect data and based on that data we will develop a theory or we will formulate a theory. Okay, and then in applied research what happens is we actually use the theories or whatever data we have collected. Based on that we try to intervene in the situation and we try to kind of provide intervention to the real life problems. सो अप्लाइड रिसर्च जो सबसे ज्यादा देखा जाता है वो टीचिंग प्रोफेशन में बहुत देखा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी तरीके के लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर किसी बच्चे में कोई लर्निंग डिसऑर्डर है और टीचर ने उस पर टैप कर लिया है कि ठीक है इस बच्चे को शायद मैथ्स को करने में स्पेसिफिकली बहुत प्रॉब्लम आती है, तो टीचर क्या करेगा, वो देखेगा कि वो उस बच्चे को मैथ्स को बेहतर तरीके से समझने में कैसे हेल्प कर सकता है, क्या मेथड्स हैं, क्या उसको एक्स्ट्रा क्लास दी जाए या उसके लिए और किसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग एड्स बना के उसको वो टॉपिक समझाया जाए। तो ये जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट जो वो टीचर डाल रहा है उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए, इट मीन्स दैट दे आर एक्चुअली सॉल्विंग अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब उन्होंने ये किया कैसे? अ टीचर गोज थ्रू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट, उसमें उन्हें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, सारा थ्योरी पोर्शन उन्हें कवर कराया जाता है, उन्हें सब पढ़ाया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है। अब उन्होंने वो थ्योरीज वहां की जो उन्होंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सीखी वो उन्होंने एक्चुअल रियल लाइफ में लगाई। सो दैट बिकेम एन अप्लाइड रिसर्च। ओके, एंड नाउ इफ द टीचर इज कलेक्टिंग डेटा और फिर वो उसको फर्दर अपनी पब्लिशिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, सो इट विल बी अ पब्लिश्ड रिसर्च स्टडी। सो दैट इज हाउ अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च फंक्शंस। In practice, applied research involves development of technology to solve specific problems that are faced in personal, familial, health, organizational, and environmental area. So basically we are saying that applied research actually helps us in developing methods to control in a particular problematic situation. Okay,
and these problems can be faced in variety of areas such as health, professional area, familial area, personal, environmental areas. Okay, so that was about basic and applied research. Now we will talk about the different methods in psychology. So the first method is experimental method. So let's see what is here. An experiment can be defined as the setting where the researchers have control over manipulation of certain variables. It is preferred over other methods as it gives a chance to study cause and effect relationships. So here you can see it says that an experiment can be defined as the setting where researchers have control over manipulation of the different variables. Okay, so there are two major highlights of this definition, that is, researcher have control over certain variables and they can manipulate certain variables. And because of that, because they have control over certain variables, they can actually see how the certain variable is affecting the behavior of their subject. Subject basically जो रिसर्च में जिसने पार्टिसिपेट किया है, जिसके ऊपर रिसर्च स्टडी हो रही है, दैट इज द सब्जेक्ट. ओके, अच्छा, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड्स एज इट गिव्स अ चांस टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट relationships. So what we need to note here is that experiments give us the control. They give us, the chance to manipulate certain variables, and they give us the chance to study cause and effect relationship in a particular situation or in a particular study. Okay, so I hope this is clear till here. If there are any queries, so we will be entertaining the queries in the last 10 minutes of this program. And okay, so shall we move forward? I hope this is clear till here. Okay. Okay, so now we are going to discuss the different steps that are involved in an experimental method. First is forming a hypothesis. Second, identifying independent and dependent variables. Sampling of participants is our third step. Fourth step is controlling extraneous variables. And fifth step is planning, designing the experiment. Sixth and last step is verifying the hypothesis. So let's discuss them a little briefly. First, it says forming a hypothesis. So hypothesis is a tentative statement that we make, So for example, let's take a situation how we will conduct a research study. So for example, if a researcher is interested in studying let's say the food habits of a particular culture, let's say, okay. So a researcher wants to study the food habits of a particular culture. Now, what the researcher will do is, now he or she says that, I will select 5 different cultures और मैं उनके food habits study करूंगा, ठीक है, या करूंगी. ओके, तो अब वो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले फूड हैबिट्स को लेके अपनी हाइपोथेसिस, अपने 5 कल्चर सबसे पहले चूज करेंगे. मान लीजिए उन्होंने ABCD करके 5 कल्चर्स चूज किए, ABCD E, ये 5 कल्चर्स उन्होंने डिफरेंट चूज किए हैं. और अब ये उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई कि डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स द पर्सन विल ऑल्सो हैव लेट्स से बॉडी बिल्ड. एक कि जिस तरीके की खाने की आदत है उसके हिसाब से एक इंसान की सेहत भी होगी, ठीक है. अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो बहुत अलग अलग तरीके की हाइपोथेसिस. तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट करंटली. लेट्स जस्ट से कि एक हाइपोथेसिस ये उन्होंने बनाई रिसर्चर ने कि जैसा कोई व्यक्ति खाना खाता है उसी के हिसाब से उसकी हेल्थ भी होती है, ठीक है. तो ये तो बन गई हाइपोथेसिस. अब
हम क्या करेंगे, उनकी इस हाइपोथेसिस में हम सेकंड स्टेप देखेंगे कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं अपने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स दो तरीके के वेरिएबल्स हैं, ये तो हम सबको पता है। अच्छा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेट किया जाएगा, ठीक है, और जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे पढ़ेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं, लेकिन उसको स्टडी किया जाता है और उस पर इफेक्ट देखा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको एग्जाम्पल से ही दोबारा समझते हैं। हमने हाइपोथेसिस बनाई कि कोई व्यक्ति जैसा खाना खाता है उसी तरीके से उसकी हेल्थ होती है। द काइंड ऑफ फूड अ पर्सन ईट्स विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द health of the person. Okay, so in that case our independent variable will be, can anybody guess or can anybody tell me what will it be? You can post your answer in the chat box. Okay, so I'll say independent variable in this case will be the kind of food the person is having, ठीक है, and the dependent variable will be हेल्थ ऑफ द पर्सन। वाई? बिकॉज हम फूड तो कल्चर के हिसाब से वेरिएशन ला देंगे, उसे मैनिपुलेट कर देंगे, लेकिन इंसान की हेल्थ को हम नहीं मैनिपुलेट कर सकते। एज अ रिसर्चर मैं सिर्फ किसी का खाना किस तरीके का दे रही हूं ये कंट्रोल कर सकती हूं, उसकी हेल्थ कैसी होगी ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। सो दैट इज हाउ वी डिसाइडेड अपॉन आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। Next step is sampling of participants. Now it is important that we select our participants randomly rather than selecting a bunch of people from a let's say from a geographical area. We need to select our sample randomly. So we'll discuss the remaining 3 steps after a short break. Thank you. NIOS, the largest open distance learning system in the world, promotes optimum use of educational technology with a motto to reach the unreached and deprived learners nationwide. NIOS also emphasizes the development of self-reliant India with quality education for the masses by meaningful innovations. NIOS has launched Virtual Open School or VOS platform to provide quality, affordable education to the enrolled learners. This platform has various flexible features. Learners will be able to participate in the live classes on this platform. Trained teachers from across the country will be able to interact and clear doubts of the learners related to their respective subjects online. The recorded videos will also be available on this platform for the learners who missed their live sessions. Learners will also get the facility to submission of online TMA, tutor marks assignment, as well as they will get feedback after the assessment, online examination and practicals direct from home through virtual labs on this innovative platform. This platform is also equipped with artificial intelligence based remote proctored examination and certification facilities. Not only this, learners can get information of Indian knowledge tradition, artificial intelligence, cyber security, mobile technician, retail management, yoga, beauty therapy and many more such courses. Apart from this, skill-based course material and Microsoft course material of NIOS is also available on this virtual open school platform. Along with the creativity development among the learners, now it will be easier to develop employability and ensure access to various job portals. One of the objectives of VOS portal
is to make inclusive education accessible to all the Divyang learners through school curriculum, including entrepreneurship and skill development. Registration on Virtual Open School or VOS is free for all the learners till 31st December 2021. No documentation is required along with enrollment number during the registration on Virtual Open School VOS platform. The innovative initiative of NIOS Virtual Open School will also be an incomparable step towards achieving the objectives for ODL with the insight of National Education Policy 2020. So dear learners, start study with the NIOS Virtual Open School today and move forward to secure future. Welcome back after the break. So we were discussing the different steps that were involved in the experimental method. So we discussed till the third step, that is sampling of participants, that we need to select our participants randomly. हमें किसी को भी specifically choose नहीं करना है अपनी research studies में, हमें एक random order follow करना है. जैसे for example, अगर मुझे 5 different cultures choose करने हैं अपनी research study के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक bowl में बहुत सारे नाम डाल देती हूँ एक पर्टिकुलर क्लासरूम का. जैसे मैंने फोकस कर लिया कि मेरा स्टडी जो है पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर हो रही है ये वाली, ठीक है, जहाँ पे लोग बहुत बहुत डिफरेंट कल्चर्स से आए हुए हैं, ठीक है. तो मैंने क्या किया, सारे नाम एक बोल में डाल दिए और एक एक करके पर्चियां निकाल के वो पार्टिसिपेंट्स अलग कर लिए. तो इससे क्या हुआ, जो भी वहां पे सैंपल के लिए पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल थे, सबका इक्वल चांस है उस रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करने का. हाउ इज दैट सो? क्योंकि मैंने किसी को स्पेसिफिकली चूज करके नहीं बुलाया, अपने मेरे कोई बायसेस इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, बस एक रैंडम मैंने पर्ची निकाली, उस पे उनका नाम आया, दैट्स व्हाई दे आर माय रिसर्च पार्टिसिपेंट. अगर किसी और का नाम आता तो वो मेरे रिसर्च पार्टिसिपेंट होते. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू चूज आवर सैंपल रैंडमली. नेक्स्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. दिस इज आवर फोर्थ स्टेप. ओके, so what happens in research studies, बहुत सारे different वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके रिसर्च स्टडी में. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फूड हैबिट और हेल्थ पढ़ रही हूं तो हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता हो, जैसे बहुत ज्यादा किसी को एक्सरसाइज पसंद है तो उसकी हेल्थ ऑटोमेटिकली बाकी सबसे अच्छी हो जाएगी. तो अब ये एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इस रिसर्च स्टडी में. सो आई नीड टू मेक श्योर कि इस तरीके का कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल मेरी रिसर्च स्टडी को इन्फ्लुएंस ना करे. अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो ये मुझे पहले से अगर पता होगा तो मैं शायद उस पार्टिसिपेंट को ना भी लूं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ फूड हैबिट्स और हेल्थ को समझना है कि कैसे फूड हैबिट्स हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं. अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसेस आवर हेल्थ इन अ वेरी गुड वे. So that is why it becomes an extraneous variable in this particular research study. So that is what we mean when we say controlling extraneous variables. The fifth step is planning or designing the experiment. So here we will see how we are going to conduct our research study further. For example, I will choose a method of collecting data here, कि मैं data कैसे collect करूंगी. अब जब food habits की बात हो रही है तो शायद मैं क्या करूं, मैं एक क्वेश्चनर बना के मैं सारे रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को दे देती हूं. उससे क्या होगा, वो मुझे अपनी फूड हैबिट्स लिख के या किसी भी तरीके से, अगर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, तो वो डेटा मुझे उस फॉर्म में दे देंगे. लेकिन मेरा एक और वेरिएबल है हेल्थ, तो मैं उनकी हेल्थ कैसे मेजर करूंगी, ये भी डेटा कलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक वेइंग मशीन ले आती हूँ, एक हाइट उनका मेजर करने के लिए एक मैंने मान लीजिए एक टेप ले लिया जिससे मैं उनकी हाइट मेजर कर रही हूँ, और मैं उनका हार्ट रेट मॉनिटर कर रही हूँ और उनके पल्स रेट मॉनिटर कर रही हूँ. तो इस सब के लिए मैंने कुछ डिवाइसेस लाई. तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपनी स्टडी को डिजाइन किया कि मैं अपने दोनों वेरिएबल्स को स्टडी कैसे करूंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस. ओके, सो द लास्ट स्टेप इज वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस. मेरी हाइपोथेसिस ये थी कि जो जिस तरीके का खाना खा रहा है वो उसकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेगा. सो
लास्ट में जो मेरा पर्पस है वो ये होगा कि मेरी हाइपोथेसिस क्या प्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। क्या ऐसा है कि मान लीजिए कि अगर कोई बहुत ज्यादा कैलोरीज, मान लीजिए फैट बहुत ज्यादा लेता है तो उसकी एनर्जी बहुत लो रहती है या उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से मैंने जो भी डेटा कलेक्ट किया मैं उसे वेरीफाई करूंगी क्या ये इस हाइपोथेसिस के साथ जा रहा है। तो इस तरीके से इफ माय हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड और नॉट will be the last step, and after then and there we'll move towards, you know, if a revision is required, if there was an error in the research study, so how we can, you know, go about it and how we can correct it in future. And if the research study is fine, we can go further for publishing. Okay, so these were the different methods involved in experimental studies. Okay, so now we are going to discuss the limitations of this method. First limitation is the findings that are obtained from this may not apply to natural settings because this is being done in a laboratory settings. Experiments are conducted in a laboratory settings so as to provide constant environment to each and every participant, and that can be done in, you know, in a laboratory setting. You cannot provide constant setting to each and everyone, you know, nearby a road. You cannot conduct your experiment nearby a road because there the level of noise, the, let's say, the quality of air will, you know, vary time to time. So you cannot conduct your study in a natural setting. That is why you conduct it in a experimental settings. Okay. The next limitation is sometimes an experiment might prove unethical or dangerous, and in some situations experiment may interfere with behavior that is measured. So what happens is कभी कभार रिसर्च स्टडीज जो हैं वो सामने वाले जो सब्जेक्ट है उसके लिए डैमेजिंग हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो बैक टू हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, देयर हैव बीन स्टडीज which actually damaged the subject or the participant of the research study. If you remember, or if you can, you know, you can find it on internet also. There was a research study conducted on a child where the child was made, you know, to fear particular furry white objects. अब उससे क्या हुआ, जब उसने उन particular white furry objects से जब उसको डर लगना शुरू हुआ तो एक छोटे चूहे से लेके एक बड़े आदमी जिसकी अगर व्हाइट बेड है तो उस बच्चे को उससे भी डर लगने लग गया. तो इससे क्या हुआ, उस बच्चे में हमने एक फियर इंट्रोड्यूस कर दिया. एंड दिस वाज डन इन अ लेबोरेटरी सेटिंग इन एन एक्सपेरिमेंट. लेटर ऑन it was decided that such experiments are unethical and this should not be done because we are, you know, damaging the participant, we are damaging the subject here. So that is why there are, you know, a lot of ethical committees currently which will actually overview the research study that a particular researcher is, you know, proposing. Next is that experiments may interfere with behavior that is being measured. Because experiments are conducted in laboratory settings, the person knows that they are being observed, they are part of a research study, and that is why they might not behave in a very natural manner, in a manner that they will outside the laboratory. So it becomes a problem for the researcher because यहाँ पे क्या हुआ, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया जिसपे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है. यू कैन नॉट, यू नो, मेजर द बिहेवियर दैट इट शुड हैव हैपन इन अ नेचुरल मैनर. सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो वन लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now we will discuss the non-experimental methods. Some aspects of behavior are difficult to study in a laboratory and much more accurate observations can be made in natural settings. For such situations, following methods are more feasible. First is observation, second is introspection, third is survey, fourth is case history, fifth is correlation. So we will discuss these a little briefly. You know, we'll move forward and we'll discuss them one by one also. So you can see here that it says that, you know, some aspects of behavior are difficult to study in a laboratory setting. As we just discussed that, you know, sometimes the experimental settings
influence the behavior of the subject, and the subject is not acting in a very natural way. So that is why we have non-experimental methods also, where we observe the behavior of the subject in the naturalistic setting only. So first such method that we will be discussing is observation. So observation, in psychological studies we use naturalistic as well as controlled observation. Okay. Also there is another kind of observation which is called participant observation, in which the observer observes by being a part of the group. So we have three kinds of observation here to discuss. First is naturalistic, second is controlled, third is participant observation. So naturalistic observation is done in a natural setting. For example, if you want to study the behavior of a child in a playground, आपको एक बच्चे का व्यवहार एक प्लेग्राउंड में ऑब्जर्व करना है, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ ऐसे लेबोरेटरी सेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं. आप किसी भी प्लेग्राउंड में चले जाइए जहां पे बच्चे खेल रहे हैं, आप वहां पे कहीं भी दूर से बैठ के उन बच्चों का बिहेवियर नोट डाउन कर सकते हैं. लेकिन ये मेक श्योर करना होगा कि बच्चे आपको ना देखें, क्योंकि अगर बच्चों में थोड़ा भी सस्पिशन हुआ कि आप उन्हें देख रहे हो तो उनके बिहेवियर चेंज हो सकता है. तो ये हमेशा एक लिमिटेशन रहती है बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में. ओके, सो दिस वाज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. सेकंड इज वी हैव कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में आप एक पर्टिकुलर सेटिंग चूज करते हैं जो आपको स्टडी करनी है, और वहां पे आप क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी की लेट्स से हाउ अ पर्सन प्लेज with other people, you know, let it be any game. For example, let's say they are playing a particular card game. तो उसका उस गेम में किस तरीके का बिहेवियर है, तो ये कंट्रोल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप उसको गेम खेलने के लिए बोलेंगे. वो इंसान अपनी मर्जी से गेम खेलने नहीं बैठा है. अगर आप कहीं जैसे क्लब में जाएंगे जहां पे लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, या आप पर्टिकुलरली किसी मान लीजिए स्कूल में जाके या किसी कॉलेज में जाके आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पे लोग खेल रहे हैं, तो ये नेचुरलिस्टिक हो गया क्योंकि वो खुद से वो एक्टिविटी कर रहे थे. जब आपने उन्हें वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए बोला, सो इट बिकेम कंट्रोल्ड. नेक्स्ट वी हैव इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्च स्टडी कर रहा है, वो एज अ पार्टिसिपेंट इस ग्रुप को ऑब्जर्व करता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिसर्चर इंटरेस्टेड है एक पर्टिकुलर ट्राइब को स्टडी करने में, तो वो क्या करेगा, वो कुछ दिन उस ट्राइब में जाके रहेगा, उनके साथ जो उनकी फूड हैबिट्स हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल है, उसको सब कुछ फॉलो करेगा और साथ साथ अपना डेटा रिकॉर्ड करेगा. तो उसने क्या किया, वो एक वहां पे पार्टिसिपेंट बन गया. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. आई होप दीज थ्री काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट मेथड वी हैव इज इंट्रोस्पेक्शन. So introspection means to look within. The attention is directed inwards to find out what is happening at the experiential level. So introspection is, you know, from the school of structuralism, where we talked about Wilhelm Wundt, we talked about Edward B. Tishner. तो introspection हमें वहां से मिला है. Introspection basically means कि आप अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट को, या आप खुद अगर मान लीजिए इंट्रोस्पेक्शन को अगर एज अ मेथड ऑफ यू नो रिफ्लेक्शन समझे, तो इसमें बस हमें ये करना होता है कि हमारा जो भी एक्सपीरियंस है हम उसे अंदर कैसे मतलब समझ रहे हैं, इनवर्ड हमने उसे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कलर रेड दिखाए तो उसका क्या मतलब है मेरे लिए. अब जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं बाय द नेम ऑफ कलर रेड, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मेरे सामने एक स्क्रीन आई जिसपे सिर्फ रेड कलर मुझे नजर आया. आई नो व्हाट रेड लुक्स लाइक, तो सबसे पहले थॉट मेरा ये था कि रेड कलर दिखता कैसा है. नेक्स्ट, रेड मेरे पास कपड़े कौन कौन से हैं रेड, मैंने ये सोचा. दूसरा, मैंने सोचा कि ओ लोग रेड लिपस्टिक भी लगाते हैं, और एप्पल भी रेड होता है. नहीं, एप्पल तो ग्रीन भी होता है, तो मतलब एप्पल तो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं. तो और कोई फ्रूट है जो रेड कलर का होता है, रेड चिली भी होती है.
सो दिस इज इंट्रोस्पेक्शन. मेरे दिमाग में जो जो थॉट्स आ रहे हैं एक वर्ड रेड से मैं वो सारे बोलती जा रही हूं. सो दिस इज इंट्रोस्पेक्शन. एक वर्ड से क्या क्या थॉट प्रोसेस चला, आपने वो सारा रिकॉर्ड, मतलब डेटा आपने सारा रिकॉर्ड किया. सो दैट इज मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. नेक्स्ट इज सर्वे. Psychologists go into the field with a prepared list of questions and interview schedules to a group of people. They carefully conduct survey, and this survey will provide information about the trend in a particular area of concern. So what happens in survey method is that, a psychologist will design a particular list of questions and they will give this list of questions to their targeted population. So for example, if a psychologist want to study that, what shampoo is trending a lot currently, कौन सा शैम्पू आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो उस पे एक क्वेश्चनर बनाएंगे कि सबसे पहले तो कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, आप वो शैम्पू क्यों यूज करते हैं, क्या उसके इफेक्ट अच्छे हैं. इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन सर्वे में डाल दिए गए और वो सबको दे दिया गया, या ऑनलाइन दे दिया या फोन पे कंडक्ट कर लिया, ये बात अलग हो जाएगी. ठीक है. तो जो भी डेटा उससे कलेक्ट होगा वो उस डेटा को फिर एनालाइज करेंगे, और जब वो डेटा एनालाइज होगा तो एक आउटकम आएगा उनके पास, और उस आउटकम से वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा शैम्पू सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है. आई होप दैट इज क्लियर. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड, case history. So it is a detailed compilation of data about a single individual. A psychologist may gather complete history from infancy to present period in order to understand a person's behavior. So in case study method, what we do is we choose a particular individual and we prepare a detailed informative report on them. So it will involve their family history, the whole family tree and their infancy. So for example, if you look at a case history form sometime in future, and you can go through on the internet also. So what happens is, सबसे पहले वहां पे होगा उनके मदर फादर का नाम, रहते कहाँ पे हैं, उनका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो, और उनकी फैमिली में प्रोफेशनल, जैसे फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, और उसके बाद स्कूलिंग कहाँ हुई, जब वो पैदा हुए थे तो क्या कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशंस थी, उनकी फैमिली में किस किस तरीके की डिजीजेस चलती हैं. तो बेस्ड ऑन एक्चुअली जस्ट बेस्ड ऑन कि आपको क्या स्टडी करना है उस पर्सन के बारे में, आप सारा डेटा उसके अराउंड गैदर करोगे. केस हिस्ट्री मेथड को सबसे ज्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज किया जाता है to gather a lot of information about the particular person and to understand the current scenario or the current situation the person is in. The last method that we have in non-experimental is correlational research. It is used to find out the relationships between two sets of factors, variables. The strength of relationship can be represented by a correlation coefficient, जिसको हम R से भी denote करते हैं, which ranges from -1 to +1. So it says that correlation is used to find out the relationships between two sets of factors or variables. So here what happens is, in correlation we understand the relationship of two variables, and so basically this is a kind of statistical method also, which we'll be talking about further. And the correlation coefficient can range from -1 to +1, where the strength and weakness of the correlation coefficient will be determined by what number we are on, between -1 to +1 only. Okay, so if there is a correlation of, let's say, -1, it doesn't mean that there is a weak correlation. It means it's a very strong correlation. It just means that the two variables, the relationship that we are trying to study between two variables is going inverse directions. So let's say a variable, when a variable move upwards, the b variable
goes downward. Okay, and if it is +1, if the correlation coefficient is +1, then it means that if A variable goes upward, then B variable also goes upward. So that is correlation coefficient. But to have -1 and +1 correlation is a very ideal situation. That does not happen in practical life. So let's say 0.89. 0.89 will be considered as a very strong correlation coefficient. Okay, so that was about it. I guess there are some questions. So let's see what are the questions. If there are any questions, you can ask. Your mics have been enabled and you can ask your questions one by one. Make sure that you don't clutter your voices. Yes? Sorry? It will be a mixed form. There will be subjective questions and there will be objective questions as well. Majorly it will consist of subjective questions. So if you have any other queries regarding the chapter that we were just doing, you can ask them, and these queries you can leave in the chat box. I hope this was clear to all. So today we will end this session here, and we will discuss the remaining part of this lesson in the next session. Thank you so much for joining us today.